Hello everyone, we will start it. Uh, Hello, dear listeners, and welcome back to another exhilarating episode of Oops Unleashed on the FOSS Files. I am your host Ravni, and I am thrilled to have you here with us today. If you have been following along from the beginning, thank you for your continued support. And if you are joining us for the first time, a warm welcome to the FOSS Files family. We have explored till now the language layer in season 1, then we have dwelled into the database chronicles in season 2, and now in season 3, we are diving headfirst into the dynamic world of Oops Unlist. Today's episode is a special one. It's all about microservices, and we have titled it as MicroMania. I hope you are excited as I am. Now, let me introduce our incredible lineup of speakers for today. Firstly, Amay Uskavkar. Then, second, Aditya Aparat. Third, Tushar Rathod. And lastly, Aradhya Pitlavar. These experts are here to guide us through the amazing world of microservices, and we are in for a treat. So, without further ado, let's dive into Micromania. Remember, if you have any questions or thoughts during the episode, feel free to reach out. So, now I request the speakers to start the podcast. Yes, hello. Aradhya, can you please share your screen? Okay, there is a technical issue at my end. I'll just rejoin the server again. Just a minute.
What's going on, everybody? Noble here with you guys today. In today's video, we're actually going to show you guys. Sorry for the delay. Let's start. So welcome to MicroMania, where we will explore microservices and its related frameworks. So this is the third episode of the FOSS Files Season 3. So until now we have seen the previous episodes about virtual machines, virtualization, Docker, Podman, Vagrant, and we have seen a glimpse of microservices and monolithic architecture in the previous episode. So let's explore further in this episode. So today we will see production bundled together. They are suppose you want to make website and there is an HTML index.html and there is also other components like there is a CSS file and there is a JavaScript file. But imagine it's all bundled together in a single HTML file. It's like a single file, right? So it's like a monolith architecture where it is all bundled together. All the JavaScript, all the CSS, all the styling, it's all bundled together. But that's what happens in monolith architecture. So let's take an example that a browser. And in browser, you go to a website like Amazon or Flipkart. So you browse to the products, you add a cart, and you add some more products. So you are actually interacting with the UI. So in a monolith architecture, it is a single instance where you communicate with a single instance. The customer care, the customer service, the product service, and the card service. They are all a single instance. So when you launch the application that is deployed on a single monolithic, we have only one instance. And if you notice, there is a customer service, product service. So to scale it, you have to run multiple instances of the same application. So now let's discuss some advantages of this application. Yes, so uh, what can you understand from these memes? Can reply it in the chat box.
May I unmute? गाइस, चैट में थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है,
तब तक चैट में बताओ आपने कौन से ऐप्स के माइक्रो सर्विसेज देखे? या आपको क्या-क्या पता है माइक्रो सर्विसेज के बारे में? Is it visible now? Yeah, it's visible. Okay. Sorry for the delay. Okay, so I welcome you to the third episode of FOSS Files, Season 3, MicroMania. So, without further ado, let's start. So, these are the contents: the introduction, microservices, microservices versus monolith, and the best for microservices. The conclusion. So, before we learn microservices, we must learn what is monolith architecture. So, monolith architecture, in simple words, is just like a big container wherein all our software components are bundled together, just like can uh, assume like an HTML index.html file, wherein all your JavaScript and CSS code is written in single file, single HTML file. And okay, so that's essentially what is monolithic architecture, where all your software components are bundled together and they are tightly packed. So let's take an example where we have an e-commerce website. Have an e-commerce website where you visit the e-commerce, you interact with the customer, customer service, the product service, and the card service. But it's all a single instance. It's all present as a single instance. That is what an monolithic architecture means. You interact with a single instance. Be whether you are using a product, you add a product to the cart. You are interacting with a single instance. That is an example of monolithic architecture. So, uh, monolithic architecture has some downsides. There are actually more downsides than there are advantages. So, let's first see some advantages. So, it's based on the idea that software is a single entity with no modularization. So, it's a single indivisible unit, and you cannot divide it further. It's straightforward and easy to implement. So, it's useful if you are a startup company. You have less people in your team, like 2 or 3 people. So, and you have focused in a single task of providing a product or service to the user. So it's not divided in in many in many small tasks. It's cost effective. It's really cost effective because you just have to focus on a single service. So it's best suited for startups or any services that require less scaling. Let's learn about some challenges while you are using monolithic architecture. The first challenge is if the code becomes large or complex, it will the another disadvantage is it will lead to slow development because it will lead to latency. And also, if you have to scale some components of the monolith architecture, only some components cannot do it because they are all single in a single instance. So cannot scale clear single component of the architecture.
So it is unreliable because the tightly coupled components in monolithic architecture pose a great reliability challenge. If one component fails, the entire system may become unavailable. It's that big. Bugs in any module can potentially bring down the entire process, making the architecture unstable. And it's also inflexible. So monolithic architecture can place inflexibility in adopting new frameworks and languages. Suppose you want to upgrade your uh, application to a newer and better technology, but you have to upgrade your whole application, not just some part. You cannot just upgrade to one component of the architecture. So let's first learn what are services. So what is a service? A service is like a helpful or something uh, that does a task or job for you, right? So we all use WhatsApp. What is it? It is a service. It helps us to communicate between our friends, family. There are also food delivery services like Zomato, Swiggy, and also streaming services like Netflix, Amazon Prime. So we can watch our favorite content from anywhere in the world. So that's basically what services. So then what are microservices? Microservices, as the name suggests, it's a way of building software applications as a collection of small dependent services that work together to create a larger and more complex application. It's like just a minute. There was actually issue with my mic. Can anyone everyone clearly? Yes, Thank you. Okay, let's continue. So the basic idea of microservices is that the every piece should be small enough so that it focuses on a single purpose, but big enough to add value as a component. Instead of building instead of building instead of building one huge application, the developers are building multiple smaller independent instances. These instances are called microservices, are plugged into one functional application. So let's take an example where we have a browser, and in a browser we are surfing on web, and we just go to an e-commerce website. We go to an e-commerce website. So there are multiple services. Right? There is customer service, then there is product service, then there is card service. So, but these all services are in the backend. So we cannot see them as they are like microservices. We just see them as a UI microservice, where we can interact with each of the services, and they all are independent with their independent databases. So let's continue.
So every architecture has its pros and cons. So let's first learn about the advantages of microservices. So the advantages are its scalability, flexibility, rapid deployment. Scalability means that you can scale individual components of a microservice. Suppose if there is Amazon.com and there is a huge sale going on, you have to scale searches and payments since those are the services that require scale because those are done hugely compared to the normal deals. So you can scale only those components. So it allows for scalability and flexibility and also rapid deployment. You can deploy rapidly rather than deploying the whole service as a whole component. You just have to deploy small services as a so it increases the increases it is so it supports faster deployment and faster development. Also team autonomy. So in microservices, you can divide your team to only on a specific service. Work on a specific service. So they are more focused and you can they are more focused and you can focus on a particular service rather than the entire application. So let's now learn some disadvantages. Distributed system overhead because it is distributed in several microservices. आमच्यासोबत There are actually if it becomes many microservices, there is an overhead. What it means that if there is a problem with a specific microservice, it is quite difficult to really detect it because it can cause some other microservices to fail, but in a limited manner. So another is cost of technology. Of course, if your team is divided, the total gain of the company is also divided. So it leads to costing and also testing challenges. If you have to test a certain, you have to deploy it, and it leads to some testing issues, which will further cover. And data consistency. The data has to be consistent, as if it cannot happen that some service has some additional data, and there is suppose like in the card service there is a product, but in the product section it does not appear that you have added it to the cart, right? That is some disadvantages. And so let's learn about microservices communication. So how do these services communicate between themselves, right? Let's learn about it. So first one is via API. What is API? Can anyone put the full form of API in the chat box? Please, guys, respond. Jyotiraditya, you can also. Application packaging interface. That's right. So each service has its own API. So yeah, this is how they communicate. For example, the payment service we need information from the user account to process the payment, right? While the checkout service will require data from the shopping cart. One common method of communication between microservices is through API calls. So each services has an endpoint, so through which they can communicate with each other by sending HTTP requests on these endpoints. So here synchronous communication is employed where one service sends a request to another service and waits for a response
For instance, a user account. So, for instance, a user account sends the HTTP request, sends a HTTP request to the payment service on its endpoint, and vice versa, right? So, same with the cart and checkout. The checkout is an HTTP request, and it waits for a HTTP response, and vice versa. So, second method is via a message broker. So, which employs asynchronous communication. In this method, services send messages first to a message broker or a intermediary message service. Okay. So the message broker then forwards this message to the respective service. For example, the user account service can send a message to the broker. Then then the message broker will then forward the message to the payment service. So that is how communication happens between microservices. So also main uh, main advantage of a microservice is that you can have uh, a single repo with multiple folders or multiple repos for even easier development. So in a mono repo, the code management and development is easier because your code is in a single repository and in different folders. So you have to clone and work on only with one repo, one repository, and the changes can be tracked together, tested together, and released together. So you all share the code and configurations. Okay. So if shared code exists between the services, you can put them in your root of the project for use by all the services. However, monorepo comes with the challenges like the risk of tightly coupled code and slow cloning, fetching, and pushing while the project is enormous. If the project is enormous, you can face the challenges. While in a polyrepo, there are there are multiple repositories which involve creating separate Git project for each services. Even though they are separate application repositories, they are part of a bigger application. So suppose there is an online shop. So they can have multiple repositories for suppose one is for shopping cart, one is for payment, one is for notifications. So I can update them individually. So it's more flexible. So GitLab's there is a feature, GitLab's feature of groups that can help you to group code for all microservices that belong to a same application in one group. So within this group, you can create a separate project for each microservice that belongs to that application and share secrets to that application, to other variables that can be shared by all projects in that same group. So both options have their advantages and disadvantages. And the general rule is that if you have a same project with just several microservices, you should stick to monorepository as it is as you can uh, deploy the changes altogether. However, if your project grows, it may become necessary to switch to poly repository. So now the big battle arises, monolith versus microservices. So let's learn which is the better architecture. So in architecture, it is in monolith, it's a single unified application where all components are tightly integrated and share the same code base. So modifying a particular part requires redeployment of the entire system, which increases interconnection and complexity of the development and deployment. So you have to suppose you want to just deploy a separate part. You cannot do that in monolithic, but you can do it in microservices where so it is decomposed into small and independent services, each with its own code base and its each database.
So microservices allow teams to independently deploy, develop, and scale services, providing autonomy and reducing dependencies. So also in scalability, monolith, it is scaled as a whole. So if you want to scale just a individual component, you cannot do it because in monolith you have to scale the entire application. You cannot scale a single component. You have to typically scale monoliths typically scale by scale vertically by increasing the resources of the entire application. So there is a horizontal scaling and vertical scaling. In horizontal scaling, uh, you have to provide multiple instances of the same application. And in vertical scaling, you can increase resources, CPU, RAM, etc. So in microservices, individual services can be scaled independently, allowing for more efficient resource allocation. Microservices are more efficient in scaling because independent services can be scaled. So also resources can be allocated more efficiently as only the necessary microservices are scaled, reducing waste. So it is more efficient. So development and deployment. Single development and deployment unit, making updates and releases slow and risky. So yes, you have to singly you cannot individually deploy single components. You have to deploy the entire application even if there are small changes. So it is deployed as a single unit, requiring coordinated. Yes, you have to require coordination of the entire team. So if there are multiple teams, you require to coordinate between each single of them so that the entire application works as a whole. So in microservices, development and deployment of services, enabling faster and more frequent updates. So even if there is small change, which can vastly improve the uh, application, you can deploy it faster, can develop it faster using a microservice architecture. So independent deployment allowing teams to release updates to individual services without affecting the entire application. So fault isolation. So if there is a failure in a monolithic architecture, the components are tightly coupled, meaning that if there is a fault in one part, it can affect the entire application. So apparently, failure in one module can or component can potentially bring down the entire monolithic application. So it is more risky to develop a monolith if it's a large application, basically. So in microservices, failures are contained within specific services, limiting the impact on the overall system. So it is less riskier, as you can see. So it provides better fault isolation as the issues in one service are less likely to impact others due to the independent nature. Each service is an independent service, so it's less likely to impact others. Also, the main advantage of more microservices is that technology stack. You can develop each independent service as a whole new language. Like I want to develop the payment using Python. I want to develop the UI using another technology. That, uh, for example, yeah, and I want the backend to be done by Node.js. You can do that using microservice. So each microservice can use its own database technology, enabling the use of more suitable database for each service. Yes, it is so flexible. So like it supports diverse technologies and programming languages for different services. So that's in microservices. In monolithic, there is a uniform technology stack throughout the application. You can only develop the whole application using only one technology. And if you want to move to a newer technology, you have to rewrite the entire application. You have to move the whole application to a new code base. So it is constrained to a technology choices made during the initial development. The mono.
So again, communication. So the communication in monolithic architecture is through in-process method or function invocation. So and in microservices is by using lightweight protocols like HTTP or API. So in monolithic, it is a lack of modularity, making it challenging to adapt new technologies. Right. So in teams working on a monolith may face bottlenecks as they need to coordinate changes a shared code base. Right. And in microservices, modular design allows for easy adaptation to new frameworks and languages. It is more flexible, and different teams can work on different microservices independently, allowing for faster development cycles. You can deploy faster if they work independently. You can deploy, develop. You can develop and deploy. It's faster in microservices. For the session to Aradhya. तो अभी तक समझा गाइस तो क्या क्या होता है बेसिक आइडिया माइक्रो सर्विसेज का. हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है, वैसे तो अपने क्लब के ही लोग हैं सारे. तो बताओ मतलब क्या मतलब एडवांटेज क्या है माइक्रो सर्विस का ओवर मोनोलिथ. यश मित. अच्छा, कभी किसी ऑडियंस में से किसने काम किया है मतलब बनाई है माइक्रो सर्विसेज. तो अभी इसके बाद इस सेशन के बाद जरा एक्सप्लोर करना कि कैसे बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज का एक प्रोजेक्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है. मतलब रिज्यूमे में अगर डाल सकते हो तो वो इंडस्ट्री लेवल पे चला जाता है. माइक्रो सर्विसेज पे ही वर्क काम होता है. तो अभी देखते हैं कि फ्रेमवर्क्स कौन से यूज किए जाते हैं माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए. तो फ्रेमवर्क्स मतलब क्या. फ्रेमवर्क्स मतलब पता है ना. ना जो टूल्स अपने नोड जेएस हो गया, जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, ये सब फ्रेमवर्क्स जो वेब डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं बैकएंड. तो आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये 4 फ्रेमवर्क मोस्टली यूज किए जाते हैं मतलब ओवर द इंडस्ट्री. नोड, स्प्रिंग, जेंगो, गो. नोड भी उतना नहीं पर स्प्रिंग बहुत यूज होता है. अब अब गो मतलब गो लैंग्वेज से गो लैंग्वेज में भी बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज बनाए जाते हैं. जेंगो मतलब पाइथन का फ्रेमवर्क है. स्प्रिंग किस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है बता सकते हो. Java. जावा राइट. और नोड तो पता ही होगा. जेंगो के अलावा फ्लास्क भी यूज करते हैं पर जेंगो एक्चुअली मोर फाइन फाइन ग्रेड हैंडलिंग देता है. तो ये 4 फ्रेमवर्क अगर आप किसी भी मतलब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या फिर जावा सीख रहे हो या फिर गो सीख रहे हो या फिर पाइथन आपकी आती है तो आप अपने हिसाब से फ्रेमवर्क चूज करके उसमें माइक्रो सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं. तो यहाँ तक समझा कौन से फ्रेमवर्क्स यूज किए जाते हैं. यहाँ पर इसके अलावा भी एएसपी डॉट नेट और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं. सो आगे बढ़ते हैं हमें. नोड जेएस के बारे में देखते हैं.
उसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर लिखा है, उसके फीचर्स। नोड.जेएस बहुत ही कॉमन फ्रेमवर्क है बैकएंड बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में, और ये इसके स्टैक भी है मॉन स्टैक या फिर मेन स्टैक। जावास्क्रिप्ट में मोस्टली नोड.जेएस यूज किया जाता है बैकएंड बनाने के लिए, और उसमें लिखा भी है बिल्ट इन माइक्रो सर्विसेज सपोर्ट रहता है करके। वेब सॉकेट सपोर्ट, रियल टाइम कम्युनिकेशन। वेब सॉकेट और रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब किस टाइप के एप्स, कोई बता सकते हो? राइट हिमांशु, नोड.जेएस इज अ रनटाइम, एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क। नोड के अंदर ही एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज किया जाता है बैकएंड बनाने, माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए। तो मुझे बताओ, वेब सॉकेट सपोर्ट, रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब किस टाइप के एप्स बनाने के लिए ये फंक्शनलिटीज लगती है? हिमांशु, एनी आइडिया? एनीवन? चैटबॉट्स, या इट्स एक्चुअली करेक्ट। और एक कॉमन बता दो, मतलब बहुत लोग यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं। व्हाट्सएप। या डिस्कॉर्ड ऑल्सो, क्योंकि अभी जो है मीट वगैरह चल रही है। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब गूगल मीट्स, डिस्कॉर्ड की मीट्स, डिस्कॉर्ड की मीटिंग्स, ये होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, और इनके लिए सॉकेट्स यूज किए जाते हैं, मतलब होता है वेब सॉकेट सपोर्ट। तो ये नोड जेएस बहुत अच्छी से उनके हैंडलिंग देता है, और उनकी जो लाइब्रेरीज है नोड जेएस में, वो बहुत ही अच्छा फीचर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करती है, और बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है नोड जेएस यूज करने के लिए और सीखने के लिए भी, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो स्टार्टिंग के लिए आप नोड जेएस से भी शुरुआत कर सकते हो माइक्रो सर्विसेज की। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग। अगर आपने जावा अच्छे से किया है, जावा अच्छे से कर रहे हो, तो आप स्प्रिंग की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि उसका भी बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसका मतलब एक कॉम्पैक्ट चीज़ में होता है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर फिर भी यूज़ करने में बहुत ही आसान है उसमें। और स्प्रिंग के साथ आपको ये है कि अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया पैड यूज़ करते हो, आईडी उनकी, तो बहुत ही ईजी जाता है स्प्रिंग में काम करना, क्योंकि उसमें एम्बेडेड वेब सर्वर होता है। और स्प्रिंग के जो फ्रेमवर्क्स है, जैसे काफका हो गया मैसेज एन्क्वायरिंग के लिए, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और एक मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो? यस। तो एक माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो स्प्रिंग में बना है। तो ये इंटेलिजे आईडी है, ओके। अभी एक्चुअली मैं रन कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसका कुछ लाइसेंस वाइसेंस लगता है। देखो, ट्रायल एक्सपर्ट लिखा हुआ है, चलता नहीं वो, कुछ मॉड वगैरह लेना पड़ता है आईडी का। तो इधर बाजू में सिर्फ फोल्डर देख लो, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये एक नॉर्मल ई कॉमर्स का माइक्रो सर्विस है, जिसमें नोटिफिकेशन सर्विस, ऑर्डर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस। मतलब ऑर्डर लेने पर वो पहले चेक करता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या नहीं, जो कि प्रोडक्ट सर्विस से बात होती है। उसके बाद डिस्कवरी सर्वर इन पूरे को मान के रखता है। जब एपीआई गेटवे पे रिक्वेस्ट पड़ती है, वो डिस्कवरी सर्वर से बात करता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए। फिर डिस्कवरी सर्वर उसको अपने हिसाब से अपने फॉरवर्ड करता है उनके रिक्वेस्ट। तो अभी चल नहीं सकता एक्चुअली वो लाइसेंस वाइसेंस का सीन। तो ऐसे बेसिकली होते हैं। और स्प्रिंग बूट में जो पैकेज मैनेजर है मेवन, उससे आप बहुत अच्छे से पैकेजेस मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कैसा होता है स्ट्रक्चर करके। और तो ये हो गया स्प्रिंग। वो बहुत सारे फीचर्स है स्प्रिंग के, मोस्टली यही यूज होता है। एज मैं ऑल्सो सेड, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क।
सो आगे बढ़ते हैं। Django Django is also a good framework for microservices. उसके लिए उसमें बहुत सारे बिल्ट इन फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज होते हैं, जिसमें जैसे Django REST फ्रेमवर्क हो गया, DRF, और Django एडमिन का सपोर्ट हो गया, इनबिल्ट डेटाबेस SQLite। ये बहुत सारे जो फीचर्स है ये Django को अपने आप में यूनिक बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज के यूज के लिए। ज्योति रहित थोड़ा Django के माइक्रो सर्विस के बारे में बता सकते Yeah, it's very popular and very helpful for if you are good in Python. सो ऐसे ज्योति रहित भी एक्चुअली पाइथन कर रहा है और उसने भी Django में बहुत सी प्रैक्टिस की हुई है। तो आप में अगर पाइथन में जानते हो तो आप पाइथन यूज कर सकते हो, पाइथन में Django बनाना यूज कर सकते हो माइक्रो सर्विसेज। तो आगे बढ़ते हैं। Next is Go. It is the most trending language in industry currently right now, and बहुत ही मतलब डिमांड होती है इंडस्ट्री में एज मोस्ट अदर मीन्स बहुत सारी कंपनीज इसमें शिफ्ट भी हो चुकी है और इसमें एक्चुअली पहले से ही काम करते आ रही है। तो ये भी बहुत इफिशिएंट फ्रेमवर्क है, पर ये एक्चुअली कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज आती है सीखने के लिए, पर अगर एक बार सीख गए, हाँ, अगर आप एक बार इसको सीख गए कम्प्लीटली तो इसमें भी काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक्चुअली WLOG इस पर इवेंट भी लेता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें गो लैंग्वेज पूरी स्क्रैच से सिखाई जाती है। तो अगर आपको गो में इंटरेस्ट हो, गो लैंग्वेज, तो आप अटेंड कर सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो कि गो लैंग्वेज का सेशन अटेंड करेंगे मेटामॉर्फोसिस, जो अराउंड फरवरी के बीच में होता है इवेंट WLOG। So these are the popular frameworks we discuss, which are useful for making microservices currently. तो इसमें कंटेनर डॉकर का भी सपोर्ट होता है गो लैंग्वेज एंड गो रूटीन्स, एंड गो लैंग्वेज के अपने कुछ फायदे जो माइक्रो सर्विसेज में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके इंस्टाग्राम का थोड़ा माइक्रो सर्विस का एक्सप्लेन। स्क्रीन दिख रही है? तो ये दिख रहा है, तो ये देखो, ये इसको बहुत ही मतलब ओवरव्यू में इंस्टाग्राम का माइक्रो सर्विसेज एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें इनग्रेस गेटवे मतलब जहाँ पर रिक्वेस्ट गिर रही है, और वेब क्लाइंट और मोबाइल क्लाइंट के हिसाब से ये फिल्टर हो जाती है। और एक गेटवे सर्विस है, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में दिखाया था, तो एक डिस्कवरी सर्विस थी जो कि सारी सर्विसेज को मतलब कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्विस में फॉरवर्ड करनी वो सब जानकारी रखती है। तो जो भी रिक्वेस्ट या इस गेटवे सर्विस पर गिरेगी वो इन सर्विसेज के अनुसार यहाँ पर चली जाएगी, जैसे ऑथ सर्विस, मीडिया सर्विस, पोस्ट सर्विस, ग्राफ सर्विस, फीड सर्विस, एक्सेट्रा। ये जो सिंबल दिख रहा है किसका है, बता सकते हैं? मतलब किस टेक्नोलॉजी में बनी है? कमेंट में बताओ किस सर्विस में बनाई गई है, किस फ्रेमवर्क में बनाई गई है। लोगो देख के बता दो, या फिर ये पढ़ के बता दो ये यूज किया मतलब क्या यूज किया होगा। अपाची काफका यूज किया है मतलब किसमें बनाई? एग्जैक्टली स्प्रिंग में बनाई। पर बीच में आप ये सर्विस देख सकते हो, ऑथ सर्विस, ग्राफ सर्विस, ये नोड में बनाई गई है। मतलब आप सर्विस के नीड के हिसाब से माइक्रो सर्विस में उसके सर्विस के नीड के हिसाब से आप फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो, उसमें डेवलप कर सकते हो। अल्टीमेटली वो एपीआई से ही बात करने वाले हैं।
और बीच में बस आपको एक ब्रोकर लगाना है, जैसे यहाँ पर काफका यूज किया गया। अब अगर एक एग्जांपल देखते हैं, सब माइक्रो सर्विस मतलब क्यों यूज किए जाने चाहिए। अब जैसे इंस्टाग्राम का समझ लो माइक्रो सर्विस से आर्किटेक्चर, इसमें बहुत सारी सर्विस है, जैसे फीड की सर्विसेज ले लो, ये स्टोरी की सर्विसेज ले लो, मतलब स्टोरीज दिखते लोगों की, ये लिख लो अपने आर्काइव्ड, मतलब आप आर्काइव्ड पोस्ट और स्टोरेज देखते हो ना, वो ये वाली सर्विस देख लो। और यहाँ पर मैसेजिंग की देखो। अब मुझे बताओ इन चार सर्विसेज में से ये फीड है, ये स्टोरी है, ये आर्काइव्ड है और ये मैसेजिंग की सर्विस है, इन चार सर्विसेज में से सबसे लीस्ट यूज मतलब सबसे कम ट्रैफिक किस सर्विस में होता है। इसके साथ ही एक बता दो कि मोनोलिथिक के अपने फायदे हैं, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती डेवलप करने में। पर माइक्रो सर्विसेज के भी अपने फायदे, कॉस्ट इफिशिएंट होता है माइक्रो सर्विसेज। एक बार अगर माइक्रो सर्विसेज में आपका सिस्टम पूरा बैठ जाता है तो फिर मतलब सालों तक उसको मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं, उसमें वो चलता रहता है। सबसे लीस्ट यूज सर्विसेज कौन सी होती है इंस्टाग्राम की इन चारों में से। फीड क्या, सबसे कम ट्रैफिक इसमें। फीड में ज्यादा ज्यादा लोग देखते हैं, स्टोरेज ज्यादा लोग देखते हैं, आर्काइव ज्यादा लोग देखते हैं, मैसेजेस ज्यादा लोग करते हैं। कौन सी सर्विस सबसे कम यूज होती है। आर्काइव। या राइट, आर्काइव। तो अगर और सबसे ज्यादा फीड, तो अगर फीड सबसे ज्यादा यूज हो रही है और आर्काइव सबसे कम यूज हो रही है, तो सिर्फ फीड के लिए मैं पूरे सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स बढ़ा नहीं सकता बराबर, उसके सर्वर्स नहीं बढ़ा सकता पूरे सिस्टम के, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। तो अब ड्यू की ये माइक्रो सर्विस में बटा हुआ है इंस्टाग्राम, तो हम अपने हिसाब से सिर्फ फीड के सर्वर्स मल्टीपल सर्वर्स रख सकते हैं रिस्पॉन्सेज के लिए, और आर्काइव का कम ही रख सकते हैं, और आर्काइव के हम कैशे भी रख सकते हैं क्योंकि फीड हमेशा बदलती रहती है, और आर्काइव बहुत ही कभी कभार लोग जाते हैं और उधर देखते हैं, इसलिए उससे कम सर्विस रहा तो भी चलता है। और इसमें से अगर एक भी सर्विस डाउन हो गई तो दूसरी सर्विसेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही एडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज का। और एक एडवांटेज की नीड के अनुसार, अगर मेरी नीड इधर माई एसक्यूएल यूज करने की है, एसक्यूएल डेटाबेस, तो मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर मोंगोडीबी यूज कर सकता हूँ। मेरी नीड के अनुसार कौन सा फास्ट है, कौन सी मेरी नीड के अनुसार जो भी रिक्वायर्ड है वो मैं अपने हिसाब से उस सर्विस में यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसी सर्विस में दो डेटाबेस यूज करने की जरूरत है, तो मैं इस सर्विस को भी दो सर्विसेज में बांट सकता हूँ और एक मिनी माइक्रो सर्विसेज यहाँ पर क्रिएट हो जाए। So you can try with all the nestings and all, and at all whole microservice will behave as a one system. अपने अंदर ही एक बटा हुआ सिस्टम रहता है और आपस में बात करते रहते हैं। तो समझा मतलब कैसा होता है सिस्टम। एवरीवन अंडरस्टूड। आपके हिसाब से आपकी टीम को कौन से स्टैक आते हैं या फिर कौन सा स्टैक नीडेड है उस सर्विस के लिए, उसके हिसाब से आप सर्विसेज में डिवाइड कर कर एक माइक्रो सर्विस बना सकते हैं। तो अंडरस्टूड। और एक बात है कि एक टर्म बता देता हूँ, अगर अपने हिसाब से अपन सर्विसेज के सर्वर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो टर्म यूज किए, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो होता क्या है, कोई बता सकता है डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। As Amar said, vertical scaling में अपन resources बढ़ा देते हैं और horizontal scaling में
एप्लीकेशन की इंस्टेंसेस ज़्यादा कर देना। एग्जैक्ट। सो वर्टिकल में अपन जैसे बताया कि कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा देते हैं, जैसे रैम बढ़ाना, रिसोर्सेज बढ़ाना, रैम बढ़ाना उसके, और अंदर जो भी जिस पे भी लोड पड़ रहा है वो चीज़ बढ़ा देना, और हॉरिजॉन्टल में उसकी क्वांटिटी बढ़ा देना। वर्टिकल में क्वालिटी और हॉरिजॉन्टल में क्वांटिटी। रिमेनिंग मतलब क्वालिटी सेम ही रख के क्वांटिटी बढ़ा देना, और यहाँ पर क्वांटिटी सेम ही रख के क्वालिटी बढ़ा देना। तो अपने नीड के हिसाब से हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं। तो आप बता देख सकते हो कि मतलब कितना एडवांटेजफुल है ये माइक्रो सर्विसेज में अपना कोई भी सिस्टम बनाना। पर ये तभी बनाना चाहिए जब आपको पता है कि आपका सिस्टम में लोड इंक्रीज होने वाला है। अगर आप कोई ऐसा नॉर्मल प्रोजेक्ट को अगर बना रहे हो, मतलब फॉर एनी, इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और कमर्शियल सॉफ्टवेयर विच इज नॉट गोना स्केल दैट मच, देन माइक्रो सर्विसेज आप ड्रॉप भी कर सकते हो। पर अगर कमर्शियल है, अगर दुनिया में जाने वाला है वो किसी काम के लिए, जैसे ई कॉमर्स या कुछ भी है, तो ऑब्वियस है कि उसको स्केल होने की जरूरत है, और माइक्रो सर्विसेज से बेस्ट। तो और माइक्रो सर्विसेज अपन अगर पिछले भी टॉपिक्स पर डॉकर एंड ऑर्केस्ट्रेशन, और माइक्रो सर्विसेज इसमें ही यूज होती है। आप मल्टीपल सर्विसेज की डॉकर कंटेनर्स बना के उसको ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ कुबरनेटिस। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट माइक्रो सर्विसेज इन टुडे सेशन इज। ये अगर आपको कोई भी और डाउट आउट होता है माइक्रो सर्विसेज में, तो आप हम में से किसी को भी मैसेज कर सकते हो, या फिर ज्योति रहते भी अभी प्रैक्टिस कर ही रहा है माइक्रो सर्विसेज, उसको भी आप मैसेज कर सकते हो। और आई गेस दत्ता ने भी गोलैंग सीखा हुआ है, तो वो भी शायद कर ही रहा होगा। अगर आपको नोड जेएस में माइक्रो सर्विस का कोई डाउट है तो हिमांशु हिमांशु भी बता सकता है। So, as the conclusion, small parts working together making big things happen in software. So, this is the conclusion of today's session. If you have any doubt, you can ask in the comment section, and we can say this session is finally concluded. So, this was it. If you have any doubt and all, you can ask it. एक बात बस ध्यान रखना कि माइक्रो सर्विस यूज बनाने के लिए किसी भी सिस्टम का एक बहुत ही इंटेंस नॉलेज होना चाहिए कि किस नीड के हिसाब से कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सा डेटाबेस यूज किया जाना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही बनाना चाहिए। So, Aradhya, one doubt from my side. Um, as we have seen that there are many frameworks. So, can you tell me, like, according to what need we can, which मतलब इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क किस क्वालिटी के लिए अपन यूज कर सकते हैं? तो अभी आप देख रहे हो कि एआई भी बहुत चल रहा है, राइट? सो यूजुअली एआई के माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए जेंगो बहुत यूज होता है। और आपको अगर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन चाहिए, जैसे ज़्यादा ओवर कॉन्फ़िगरेशन हो जिसमें पूरा अच्छे से मैनेज होता हो पैकेजेस एंड ऑल, तो आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो जावा का, क्योंकि बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है पैकेजेस एंड ऑल। और आपको अपना अगर माइक्रो सर्विसेज मिनिमलिस्टिक रखनी हो, जिसमें डेवलपर्स को अपने कोड स्ट्रक्चर कर सके, अपना ट्राई करके देख सकते फिट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए आप एक्सप्रेस जेएस यूज कर सकते हैं। आपको पूरा फाइन ट्यून्ड कंट्रोल चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर, तो आप जाएंगे यूज कर सकते हो। और जरा थोड़ा हल्का चाहिए, मतलब ज्यादा रेडीमेड यूज करते हैं, तो आप फ्लास्क यूज सकते हो, एज इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज डेवलपर्स टू चूज देयर कंपोनेंट्स। तो मिनिमलिस्टिक हो, कुछ ज़्यादा लोड नहीं रखना हो अपने ऊपर, तो एक्सप्रेस जेएस और सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन तैयार करना हो, जैसे बिग एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स लेवल और इंस्टाग्राम लेवल, देन यू कैन गो फॉर स्प्रिंग। एंड इफ यू वांट अ मोर फाइन ट्यून कंट्रोल एंड यू आर मोर कंफर्टेबल इन पाइथन, देन यू कैन गो फॉर Django.
So I hope Himanshu, I have cleared your doubt. Yes, it was clear. So Spring सबसे पॉपुलर क्यों? क्योंकि एज अ जावा बीइंग ओल्ड लैंग्वेज, स्प्रिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस पहले से मतलब बन चुके हैं और वो आई गेस पहले भी आए हुए फ्रेमवर्क, तो इसीलिए सारे मतलब बिग कंपनीज में उसमें काम किया। और एज अभी मैंने बताया कि पैकेजेस सबसे अच्छे से मैनेज वही करता है। उसके जो पैकेज मैनेजर है मेवन, वो अच्छे से आपको कंट्रोल देता है कि अच्छे वो अच्छे इंस्टॉल करना, एंड इट हैज facility like using XML file for dependencies and all. So that's why Spring is a more popular framework than compared to others. Any more doubts? So I encourage everyone to try microservices on your own, learn it. If any doubt arises, you can ask us. And any more doubts, then I can conclude the session. So everyone, this session is over. That was a good session, and I appreciate Amay for his first podcast, and coming more from the in on next Saturday. So have a good night. Shabba khair. Good night. Thank you, everyone. Good night.